Hello guys, good evening. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. First of all, a little bit of introduction. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I'm teaching you all physiology. अगर नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है. ऑन एन एवरेज 15 to 17 क्वेश्चन कम इन आर एग्जामिनेशन यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो एवरीबडी क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट विद गुड रैंक. This is our Telegram page. Let's crack NEET PG. Follow us out there. You will get each and every classes link out there. This is my page on Unacademy, unacademy.com/@KGMC. You can follow me out there so that you will get notification of each and every classes. This is the referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. I taken very काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस नहीं है, काफ़ी सारे प्लस क्लासेस नहीं है. सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक. इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी हैव अनलॉक 20 अगेन. ठीक है, सिर्फ आज के लिए ये वैलिड है ये ऑफर. इसमें क्या है कि आप अपने सब्सक्रिप्शन पे जब अपना मेरा रेफरल कोड अप्लाई करोगे, दैट इज डॉक्टर निधि, एंड आपकी फीस तब हो जाएगी 20% रिड्यूस. तो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए. सो डू यूज़ दिस रेफरल कोड डॉक्टर निधि एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दिस इज़ द बेस्ट है, क्योंकि ह्यूज स्लैश्ड आउट है आपका जो फी स्ट्रक्चर है. Now coming to the subscription, we have two type of subscription, plus subscription and iconic subscription. First coming to the plus subscription, what all are the benefit? You are able to access both live and recorded session. किसी वजह से आपका सेशन मिस हो जाता है तो आप recorded version देख सकते हो. You have an opportunity to learn from India's top educator for the medical examination. We always conduct this live test and live quizzes. From that you can analyze your preparation at any point of time. You have a flexibility, you can study on the device of your choice. We have a question bank which consists of 25,000 plus question. High yield question है, clinical based question and with explanation है. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया के दो बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा, दैट इज अनअकैडमी एंड द प्रेप लैडर. यानी अनअकैडमी के सारे प्लस बेनिफिट आपको मिल जाएंगे. लाइक आई सेड, live classes, recorded classes, question bank, live tests, live quizzes. Along with that, you get access for the prep ladder. In this, you can access the clinical and integrated essential of prep ladder, video lecture from the dream team, question bank 3.0, rapid revision and snapshot, and you will also be provided with that tradition and dream notes. So if you want to access the prep ladder also, go for the iconic subscription, everybody. They are our FMG December 2021 toppers. स्पेशल क्लास फीचर की बात करेंगे तो हमारे स्पेशल क्लासेस ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट डिफरेंस ये है कि वो हमेशा लाइव क्लासेस होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, पोज के फीचर होते हैं जिससे क्लास काफ़ी इंगेजिंग होता है. रेज हैंड फीचर्स है जिससे आप अपने एजुकेटर से बात करके लाइव सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हो. अगर किसी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो उनके क्लास से प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. आफ्टर द लेक्चर यू कैन डाउनलोड द PDF एंड रिवाइज इट एनी टाइम एनीवेयर. ऑल एजुकेटर रिविजन बैच स्टार्ट हो चुका है. 90 डेज की ड्यूरेशन है. 16 फेब को स्टार्ट हुआ है एंड इट विल लास्ट टिल 10th मई. ठीक है, 4 आवर पर डे रिविजन होगा, 8 ग्रैंड टेस्ट होंगे. तो डू एनरोल योरसेल्फ इफ यू आर टारगेटिंग दिस नीट PG 2022. नीट PG 2022 अल्ट्रा फास्ट रिविजन बैच भी स्टार्ट हो चुका है. 15 डेज इसकी ड्यूरेशन है. नीट PG 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच भी स्टार्ट हो चुका है 16 फेब से. इसकी भी ड्यूरेशन 15 डेज है. नीट PG 2022 इमेज बेस्ड क्वेश्चन बैच भी स्टार्ट हो चुका है. इसकी भी ड्यूरेशन है 15 डेज, 16 फेब से स्टार्ट हो चुकी है. तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना बैच चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. फोकस FMG दिसंबर 2022 बैच 9 मंथ वाला भी स्टार्ट है. फोकस FMG 2022 कॉम्प्रिहेंसिव बैच 4 मंथ के ड्यूरेशन का. तो काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना एनरोलमेंट कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. Do remember we are going to have this unlock 20. ठीक है, this is applicable for both iconic subscription as well as plus subscription. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज डॉक्टर निधि. इस रेफरल कोड को अप्लाई करते ही आपकी फीस इंस्टेंट 20% डिस्काउंट हो जाएगी. तो डू रिमेंबर द रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि. ठीक है, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है. डू रिमेंबर, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम.
coming to the topic, that is regulation of respiration. ठीक है, our respiration can be regulated by either neural mechanism or the chemical mechanism. ठीक है, for neural regulation the receptors are present in brain areas. ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है? इन पॉन्स एंड मेडुला द रेगुलेशन सेंटर्स आर प्रेजेंट. Chemoreceptor, for chemical regulation we have chemoreceptor which are sensitive to oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion changes in our blood. ठीक है, अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन एंड द केमिकल रेगुलेशन. ठीक, चलो अब इसी को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट कमिंग टू द टर्म दैट इज ऑनडाइन कर्स. नॉर्मली हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में होता है, बट व्हेन दिस ऑटोनॉमिक रेगुलेशन स्टॉप, कॉन्शियस ब्रीदिंग स्टार्ट्स. दिस इज नोन एज ऑनडाइन कर्स. ठीक है, ऑनडाइन कर्स क्या है? ऑटोमेटिक रेगुलेशन स्टॉप एंड कॉन्शियसली पेशेंट हैज टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड दिस इज सीन इन bulbar poliomyelitis, carbon dioxide narcosis, disease that compresses the medulla will lead to this ऑनडाइन कर्स. एंड ऑनडाइन कर्स में ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? पेशेंट डे टाइम में क्या है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट अपना कॉन्शियसली कर लेगा, बट नाइट टाइम में वी हैव टू पुट देम इनटू द वेंटिलेटर्स. So that is the treatment line for the ऑनडाइन कर्स. Coming to the neural center of respiration. तो न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के पॉन्स एंड मेडुला में प्रेजेंट है. फर्स्ट कमिंग टू द पॉन्स. इन पॉन्स टू सेंटर्स आर देयर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द एपन्यूस्टिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट है. एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट है. ठीक, इन मेडुला 3 centers are there: dorsal respiratory group of neuron, ventral respiratory group of neuron and our pre-Botzinger complex. See, this is the diagram. ये हमारा pons part हो गया. In upper pons we have pneumotaxic center, in lower pons we have apneustic center. ये हो गया medulla oblongata, and in medulla oblongata we have dorsal respiratory group of neuron, ventral respiratory group of neuron and the pre-Botzinger complex. ठीक, अब इन सभी पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे. फर्स्ट कमिंग टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. व्हाट डज दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर डू? इट लिमिट द इंस्पिरेशन. एंड हाउ इट is going to limit the inspiration? It limit the inspiration by inhibiting the apneustic center, and inspiration limit हो जाएगा, हमारा expiration start हो जाएगा. So in overall we can say the pneumotoxic center increases the respiratory rate. ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? ये हमारा इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है. दैट्स व्हाई वी सेड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे हुआ करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करके इंस्पिरेशन को लिमिट करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी से दैट. ठीक, एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को. नेक्स्ट कमिंग टू द मेडुला. First is the pre-Botzinger complex. This pre-Botzinger complex act as a pacemaker of respiration because initiation of respiration occur from pre-Botzinger complex. Take next is the dorsal respiratory group of neuron. This dorsal group of respiratory group of neuron is responsible for generating the RAM signal, and this RAM's excuse me. This RAM signal is responsible for a steady rise in tidal volume, and our tidal volume of 500 ml will be reached. ठीक है, dorsal respiratory group of neuron क्या कर रहा है? RAM signal generate कर रहा है, and that is going to cause steady rise in tidal volume. Next, the last one, ventral respiratory group of neuron. रेस्टिंग कंडीशन पे इसका कोई रोल नहीं होता. इट ओनली एंड ओनली वर्क व्हेन एक्सपिरेशन इज फोर्सफुल. सो फोर्सफुल एक्सपिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट होता है. ठीक, तो इसीलिए उस समय जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट जो लगती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव या ओवर ड्राइव फेनोमेनन.
Is this clear with everybody? तो प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ पेस मेकर. ठीक. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या कर रहा है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रैम सिग्नल जनरेट कर रहा है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या कर रहा है? इट वर्क ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस. ठीक. क्लियर. पॉन्स में 2 सेंटर थे, वहाँ न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनिस्टिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को, लिमिट करता है इंस्पिरेशन को बाय इनहिबिटिंग एपनिस्टिक सेंटर. एपनिस्टिक सेंटर क्या करता है? प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? सारे ग्रुप का फंक्शन याद रखिएगा. तो along with the pneumotaxic center, a vagal afferent from lung also inhibit the apneustic center. ठीक है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर along with the vagal afferent from the lung inhibit the apneustic center. So we can say the vagal afferent from lung also causes limit in the inspiration. Is this clear? Everybody? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हाउ आवर होल रेस्पिरेशन इज इंटीग्रेटेड. ठीक है. फर्स्ट इज द इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन. इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है? मेड्यूला से हो रहा है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हमारा प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है, दैट इज एक्टिंग एज अ पेस मेकर, दैट कॉजेज इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है. वहाँ से सिग्नल आता है. वहाँ से सिग्नल कहाँ आता है? स्पाइनल कॉर्ड में C3, C4 एंड C5 नर्व रूट फ्रेनिक नर्व के थ्रू. ठीक है. एंड दैट कॉजेज डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड इट इज गोइंग टू कॉज इंस्पिरेशन. इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? मेडुला में. मेडुला में कहाँ हो रहा है? प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स में. वहाँ से सिग्नल कहाँ जा रही है? डायफ्राम में वाया फ्रेनिक नर्व्स. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा इंस्पिरेशन होता है. ठीक है. सो वी हैड सीन दैट प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इज अ पेस मेकर. सो रेस्पिरेशन हमारा कैसा है? इनवॉलेंट्री है. बट इन सम केसेस दिस प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट. उस केस में क्या होगा? रेस्पिरेशन विल बिकम वॉलेंट्री. पेशेंट हैज टू ब्रीथ कॉन्शियसली. That phenomena is known as Ornstein curse. Remember, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस में भी देखने मिलता है. एंड ट्रीटमेंट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन ड्यूरिंग द स्लीप. ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं इनिशिएशन के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंस्पिरेशन. हमारा मेंटेनेंस में क्या है? टाइडल वॉल्यूम मेंटेन होता है 500 ml का. दैट अकर बाय डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करता है? रैम सिग्नल जनरेट करता है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 ml. ठीक. तो देखो कैसे इंटीग्रेट होता है. एपन्यूस्टिक सेंटर इन लोअर पॉन्स क्या करेगा? हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करेगा? रैम सिग्नल जनरेट करेगा. दैट इज गोइंग टू कॉज स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम. Is this clear with everybody? Coming to the next, that is termination of inspiration. जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml रीच कर जाएगा तो हमारा इंस्पिरेशन शुड स्टॉप. सो इसके लिए हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड वेगल आफ्रेंट वर्क करता है. दे बोथ इनहिबिट द एपनिस्टिक सेंटर. एंड एपनिस्टिक सेंटर इनहिबिट हो जाएगा. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा. रैम सिग्नल जनरेट नहीं होगी एंड हमारा इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक. तो इसके लिए क्या क्या वर्क किया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द वेगल आफ्रेंट फ्रॉम द लंग्स. They both inhibit the apneustic center and that is going to inhibit dorsal respiratory group of neuron. Is this clear with everybody? चलो अब आ जाएंगे न्यूरल रीजन. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल रीजन से रेस्पिरेशन कैसे अफेक्ट होता है.
फर्स्ट दैट इज लीजन बिलो द मेडुला. तो क्या है हमारा यहाँ पे पॉन्स भी वर्किंग है, मेडुला भी वर्किंग है, बट मेडुला में ठीक. अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज pontomedullary जंक्शन लीजन. So this is pontomedullary junction, upper pons, lower pons, upper pons, lower pons, and the medulla. And lesion is pontomedullary junction lesion. So in this situation, what happened? Medulla will be working, but our pons will not be working. हमारा medulla क्या करता है? Medulla initiate the inspiration. Pons क्या करता है? Regularize the respiration. So out here क्या होगा? हमारा initiation of respiration होगा, but it will not be regularized by pons. So इस situation में क्या मिलेगा? We will see the irregular respiration in pontomedullary junction lesion. Is this clear with everybody? Coming to the next one, that is mid-pontine lesion with a vagus cut. So let me draw the diagram. Upper pons, lower pons, upper pons, lower pons, and the medulla. ठीक है. अब लीजन कहाँ है? मिड पॉन्टाइन लीजन है. तो इस सिचुएशन में बिलो ऑर्गन्स विल बी वर्किंग. तो यहाँ पे क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल नॉट बी वर्किंग. ठीक है. बट यहाँ पे क्या है? एपन्यूस्टिक सेंटर विल बी वर्किंग. सो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? इट प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेशन. सो यहाँ पे क्या मिलेगा? Inspiration will be prolonged, and this type of breathing is known as apneustic breathing. So in mid-pontine lesion with vagus cut, inspiration will be prolonged, or we can see the apneustic type of breathing will be seen. Is this clear with everybody? See, this is the diagram. This one below the medulla. Below the medulla अगर lesion है तो क्या होगा? हमारा initiation pre-Botzinger complex will be working, but it cannot send the signal to the diaphragm, so there will be no initiation of inspiration, so patient will die for sure. Next is the pontomedullary junction lesion. इस situation में क्या है? Pons will be not working, only and only medulla will be working, and medulla क्या करेगा? Initiate कर देगा, but regularization will not be there, so we will get the irregular type of breathing. ठीक है. नेक्स्ट इज द मिड पॉन्टाइन लीजन. इन मिड पॉन्टाइन लीजन में क्या होगा? हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर विल बी वर्किंग, बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल नॉट बी वर्किंग. सो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा? प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, एंड इट इज गोइंग टू कॉज इंस्पिरेटरी रिस्पॉन्स, एंड दैट टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? सेशन समझ में आ रहा है सभी को? किसी को अभी तक सेशन में कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. न्यूरल लीजन में, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. एनीवन? डू रिप्लाई फास्ट. किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. प्रोसीड करें फिर फर्दर. डॉक्टर कौस्तुभ, सी
First is the lesion below the medulla. So what happened? Medulla will initiate out here. हमारा pre-Botzinger complex will be working. So pre-Botzinger complex क्या करेगा? It will cause initiation of inspiration, but that doesn't reach to the diaphragm. ठीक है, because lesion is below the medulla, so the signal will not reach to the diaphragm via the spinal cord. So what happened? Our diaphragm will not contract, so breathing will not start, and out here due to stop of breathing, patient will die. अगर वेगस इंटैक्ट हो या वेगस कट हो, दोनों ही सिचुएशन में सेम थिंग विल हैपन. नेक्स्ट इज द pontomedullary junction lesion. What does medulla do? Medulla initiate the respiration. What does pons do? It regularize the respiration. So when a lesion is between the pons and medulla, pons will not be working. So we will get the irregular respiration. Last one, that is mid-pontine lesion. So out here क्या होगा? Pneumotaxic center will not be working, only and only apneustic center is working. What does apneustic center do? Apneustic center prolong the inspiration, and that type of breathing is known as apneustic breathing. But यहाँ पे अगर vagus intact होगा तो vagus nerve is going to inhibit the apneustic center. यहाँ पे फिर हमें normal breathing मिलेगी. Is this clear, Dr. Kaustubh? प्रोसीड करते हैं फिर फर्दर. चलो, now after the neural regulation, coming to the chemical regulation of respiration. For chemical regulation we have chemoreceptors, and that chemoreceptor are sensitive to oxygen concentration, carbon dioxide concentration and hydrogen ion concentration in our blood. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कमिंग टू द chemoreceptor. So location of chemoreceptor, it is either present in brain or neck. In brain, the chemoreceptor are known as central chemoreceptor. In neck, it is known as peripheral chemoreceptor. So in brain, the central chemoreceptor are located in the ventral surface of medulla surrounding the floor of fourth ventricle. And peripheral chemoreceptor कहाँ present होता है? Carotid body and the aortic body. Anyone, हमारा जो blood pressure baroreceptor centers होते हैं वो कहाँ present होते हैं? Baroreceptors कहाँ present होते हैं? Anyone? Where the baroreceptors are present? Baroreceptor is present in carotid sinus and aortic sinus. Confused नहीं होना है. Chemoreceptors are present in aortic body and carotid body. Take, see, this is the diagram. This is our carotid body which is present at the bifurcation of common carotid artery, and the aortic body which is present in aortic arc. ठीक, अब किस तरह ये वर्क करता है? फर्स्ट कमिंग टू द सेंट्रल chemoreceptor. सेंट्रल chemoreceptor के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. This central chemoreceptor detect oxygen change, and our normal respiration is also carbon dioxide dependent. ठीक है, our central chemoreceptor also detect carbon dioxide change in the blood, and our normal respiration is also carbon dioxide dependent. Do remember these two statements. Both are very, very important. So whenever there is increase in carbon dioxide, let me change the color. So whenever there is increase in carbon dioxide, क्या होगा? Carbonic acid will be more. So there will be increase in hydrogen ion also. So in among these two, only and only carbon dioxide crosses the blood-brain barrier. So what happened? Inside the brain, it is going to react with the water in the presence of carbonic anhydrous, and the carbonic acid will be formed. This carbonic acid dissociate to form hydrogen ion and the carbon dioxide. ठीक है? This hydrogen ion is going to stimulate the central chemoreceptor. ठीक है? तो दो स्टेटमेंट आ गया. सेंट्रल chemoreceptor डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड चेंज, बट द डायरेक्ट स्टिमुलस की अगर बात करेंगे कि डायरेक्ट स्टिमुलस क्या है टू स्टिमुलेट द chemoreceptor, सेंट्रल chemoreceptor is the hydrogen ion. Is this clear with everybody? So these two statements are very important. Central chemoreceptor are sensitive to carbon dioxide in the blood, and it is directly stimulated by hydrogen ion in the CSF.
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. Is this clear with everybody? The two statements are clear. Proceeding to the further, next is the peripheral chemoreceptor. Peripheral chemoreceptor is present in our neck region in the form of aortic body and the carotid body. This peripheral chemoreceptor detect decrease in partial pressure of oxygen, or you can say this peripheral chemoreceptor is stimulated during hypoxia. ठीक है, this chemoreceptor consists of a glomus cell. What is this glomus cell is special? Because it consists of oxygen sensitive potassium channel. ठीक है, glomus cell क्या है? Oxygen sensors है, that is present in our carotid and aortic body, and they are having the oxygen sensitive potassium channel, and this senses the hypoxia. So what happened during the hypoxia? This oxygen sensitive potassium channel will get closed and potassium will start to accumulate inside the glomus cell. So due to that क्या होगा? Depolarization होगा. Depolarization होगा. Depolarization की वजह से voltage gated calcium channel open होगा, and that is going to cause release of dopamine. ठीक है, and that is going to reach the brain. ठीक है, ब्रेन में रीच करेगा, there will be chemo reflex. ठीक है, इज दिस क्लियर? सो क्या हुआ, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन सेंसिटिव चैनल क्लोज हुआ, पोटेशियम एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, दैट इज गोइंग टू कॉज अ डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, दैट इज गोइंग टू कॉज एक्सोसाइटोसिस ऑफ डोपामिन, एंड दैट डोपामिन रीचेस टू द ब्रेन, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज chemo reflex. That's how our glomus cell, which is present in our aortic body and carotid body, will be stimulated. ठीक है, see this is the same diagram. Peripheral chemoreceptors, they are sensitive to hypoxia. So whenever there is hypoxia, this is sensed by this glomus cell in our carotid body and aortic body. So that causes closure of this potassium channel. Potassium channel close होगा, potassium accumulate होगा, cellular depolarization will occur. Due to that, voltage gated calcium channel open up, calcium enters, and that is going to cause release of this neurotransmitter. Dopamine will be released, and that is going to reach the brain to cause chemo reflex. अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. Our central chemoreceptor are sensitive to Our central chemoreceptors are sensitive to increase in carbon dioxide concentration. Our peripheral chemoreceptor are sensitive to hypoxia. But the common stimulus for both of them is increase in hydrogen ion. So whenever there is increase in hydrogen ion, it will stimulate both central as well as peripheral chemoreceptor. Along with that, decrease in blood pressure is also the common stimulus for both of them. Decrease in blood pressure will also stimulate both central and the peripheral chemoreceptor. So do remember this point. This point is very important. Now coming to the last, that is chemoreflex. What is chemoreflex? Due to asphyxia, that is due to hypercarbia, hypoxia and acidosis, our chemoreceptor will be stimulated, both central as well as peripheral chemoreceptor, and that is going to cause this chemoreflex. This chemoreflex is nothing. The hypoventilation will start. Both rate and the depth of breathing will increase. एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज होगा. देयर विल बी डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. सो दिस इज द chemoreflex. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? किसी को अभी तक सेशन में कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. एनीबडी, एनीवन, कोई भी क्वेरी हो, न्यूरल रेगुलेशन या सेंट्रल केमिकल रेगुलेशन, तो किसी में भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आई गेस क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं.
किसी को भी कोई भी क्वेरी? Anyone? Any query? Proceed करें फिर further. Coming to the first question of today's session, pacemaker of respiration or spontaneous rhythmic respiration is initiated in dorsal nuclear group, apneustic center, pneumotaxic center, or the pre-Bolsinger complex. Everybody answer this question. Everybody answer this question. The pacemaker of respiration is a pre-Bolsinger complex. Very good. Coming to the next one. Inspiratory depth is halted by pneumotaxic center, apneustic center, inspiratory center, or expiratory center. Inspiratory depth is halted by. Everybody answer this question. Inspiratory depth is halted by. Everybody answer this question. Inspiratory depth is halted by pneumotaxic center by inhibiting the apneustic center. So answer is A. Coming to the next, transaction at mid-pons level result into hypoventilation, apneusis, rapid and shallow breathing, or hypoxia. Transaction at mid-pons level result into Everybody answer this question.
Everybody answer this question. ट्रांजैक्शन एट मिड पॉन्स लेवल रिजल्ट इन मिड पॉन्स लेवल पे लीजन होगा तो क्या होगा हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल नॉट बी वर्किंग, ओनली एंड ओनली एपन्यूस्टिक सेंटर विल बी वर्किंग. सो उस केस में ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी, एपन्यूसिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग विल बी देयर. Coming to the next one, which of the following, what will be the effect on respiration of transmission is met within pons and medulla? Apnea, irregular and gasping, no effect, slow or deep. So everybody answer this question. What will be the effect on respiration if transmission is made between pons and medulla? Everybody answer this question. ट्रांसमिशन इज मेट बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला. इस सिचुएशन में क्या है, हमारा मेडुला विल बी वर्किंग बट पॉन्स विल नॉट बी वर्किंग. सो पॉन्स क्या करता है, रेगुलराइज करता है. सो आउट हियर वी विल गेट द इरेगुलर और गैस्पिंग टाइप ऑफ ब्रीदिंग. आंसर इज बी. Coming to the next one, true regarding respiratory center is directly stimulated by fall in partial pressure of carbon dioxide oxygen, stimulated, inhibited during swallowing, connected with the cardiac center situated in the midbrain. True regarding respiratory center is. Everybody answer this question. True statement regarding respiratory syndrome. Everybody answer this question. True regarding respiratory center. Our respiratory center is inhibited during swallowing. So answer is B only. Coming to the next one. Central chemoreceptor is most sensitive to the following changes in blood. Increase in partial pressure of carbon dioxide. Decrease in partial pressure of carbon dioxide. Increase in hydrogen ion. Increase in partial pressure of oxygen. Central chemoreceptor are most sensitive to following changes in the blood. Everybody answer this question. Central chemoreceptor are most sensitive to following changes in the blood.
इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी ट्रू। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, सबसे पहले हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्राइमरी डायरेक्ट स्टिमुलस फॉर एक्साइटेशन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर रेगुलेटिंग वेंटिलेशन इज इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन ऑक्सीजन और डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। The primary direct stimulus for excitation of central chemoreceptor regulating ventilation is everybody answer this question. The primary direct stimulus for excitation of central chemoreceptor regulating ventilation is डायरेक्ट स्टिमुलस की अगर बात करेगा तो दैट इज इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। आंसर इज ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट समझ में आया। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आर मोस्ट सेंसिटिव टू फॉलोइंग चेंजेस इन ब्लड, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वाज प्राइमरी डायरेक्ट स्टिमुलस फॉर एक्साइटेशन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इज हाइड्रोजन आयन। Yeah, very true, Dr. Apur. Coming to the next, the most important stimulus for peripheral chemoreceptor is partial pressure of oxygen, carbon dioxide, pH or the bicarbonate. Everybody answer this question. The most important stimulus to peripheral chemoreceptor is the most important stimulus to peripheral chemoreceptor is hypoxia, that is partial pressure of oxygen. Coming to the next, peripheral and central chemoreceptor may both contribute to increased ventilation that occur as a result of decreased blood pressure, arterial tension, arterial oxygen concentration or hydrogen ion. Peripheral and central chemoreceptor may both contribute to increased ventilation that occur as a result of decreased सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर कब दोनों स्टिमुलेट होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता है या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. सो आंसर इज ओनली एंड ओनली ए. Is this clear with everybody? Coming to the next one, which of the following doesn't stimulate our peripheral chemoreceptor? Hypoxia, hypocapnia, acidosis, or low perfusion pressure?
Which of the following doesn't stimulate peripheral chemoreceptor? Hypocapnia doesn't stimulate our peripheral chemoreceptor. Answer is B. Coming to the next one, administration of pure oxygen to hypoxic patient is dangerous. Why is it so? Apnea occurred due to hypostimulation of peripheral chemoreceptor, pulmonary edema, diphosphoglycerate, or convulsion. Everybody answer this question. Administration of pure oxygen to hypoxic patient is dangerous. Why is it so? देखो हाइपोक्सिक पेशेंट है तो कौन सा स्टिमुलस होगा, हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, कीमो रिफ्लेक्स होगा, हाइपोवेंटिलेशन विल स्टार्ट. बट अगर हम उस सिचुएशन में प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं तो हमारा हाइपो स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से एपनिया होने के चांसेस है. सो आंसर इज ए. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट तो क्लियर कर सकते हैं. एनीवन, एनी क्वेरी? चलो, होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन डू लाइक एंड शेयर. जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी इंटरएक्टिव होती है. सो डू शेयर एवरीबडी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आवर चैनल इज लेट्स क्रैक नीट पीजी and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. ठीक है, press the bell icon everybody. ठीक है, चलो रेगुलर मेहनत करते रहिए. You will definitely able to achieve your target. Do and do more and more MCQ. From MCQ you will always be more conceptual. So do more and more MCQ. You will be definitely able to achieve your target. So let's crack it together. See you all in the next session. Bye bye everybody. This is the referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. आज के लिए, सिर्फ आज के लिए जो ऑफर चल रहा है, बाय यूजिंग माय कोड यू कैन गेट 20% एडिशनल ऑफ. तो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाएगा. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम. ठीक है, डू एनरोल योरसेल्फ एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय एवरीवन.